Good morning, children. I hope you all are fine and safe. So, first of all, take out your term 1 book, composite term 1 book. Okay, last time I told you that we will do our exercise in term 1 book. Okay, take out your term 1 book and then open your page number 96. Alright, this chapter we have not done subtraction. This time we will start our new chapter, and that is chapter 3, subtraction. Is that clear? Here you can see in your book there are 8 pencils and you have to subtract 5 pencils. You can see, you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 में से आपने 5 पेंसिल को क्रॉस कर दिया. 1, 2, 3, 4, 5. So how many pencils left? 3 pencils. You can see 1, 2 and 3. 3 pencils are left with us. So this is called subtraction. Okay. 8 minus 5 is equal to 3 is a subtraction fact. You can call it subtraction fact. In 8 minus 5 is equal to 3. 3 is called the difference of 8 and 5. The result you are getting, that is called difference. Is that clear? This is called subtraction. Clear, students? So let's start with our क्वेश्चन नंबर 1. आप सभी की नोटबुक्स अभी स्कूल में है. अभी आपको नोटबुक नहीं मिली है, तो इसीलिए मैम आपको बुक में ही एक्सरसाइज करवा रही है. ठीक है, तो सभी आप लोग अपनी बुक ओपन करके बुक में एक्सरसाइज करोगे. देखिए, हियर इट इज 16 माइनस 4. सो सब्ट्रैक्शन के लिए एक तो सभी को बैक काउंटिंग अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हम बैक काउंटिंग से करेंगे. ओके, सो open your 4 fingers. Clear? 16 in your mind. Open your 4 fingers. 16 minus 4. 4 fingers you will open. Then start your back counting. 16, 15, 14, 13, 12. Finger fold करते रहोगे back counting के साथ. So what is the answer? Answer is 12. So you will write here 12. Okay, now here it is 20 minus 9. Open your 9 fingers and let's start back counting. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 and 11. What is the answer? The answer is 11. So you will write here 11. Okay. Now moving to this part, 21 minus 8. So again you will open your 8 fingers and let's start with back counting. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 and 13. So what is the answer? The answer is 13. So we will write 13 here. Okay. Then our next question is 18 minus 5. So again open your 5 fingers and let's start doing back counting. 18 is 18 in your mind. 17, 16, 15, 14 and 13. So what is the answer? 13. These 2 questions you will do yourself by using back counting. Okay, और सभी को बैक काउंटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए. इसके लिए अगर आपको बैक काउंटिंग अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करने से पहले बैक काउंटिंग की प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. नाउ हियर इट इज ऑल्सो
subtract. Now you can see 40 minus 20. We can see here the difference of 20. So you can see 4 minus 2 is equal to 2. So here 20. What is the answer? 20. 60 minus 30, to 0 minus 0, we know that 0. 6 minus 3, 6 in your mind and open your 3 fingers, 6, and then do back counting, 5, 4, 3. So here what will come? 30. Okay. Then here 70 minus 50, in place of 0 what will come? 0. And 7 minus 5, 7 in your mind and then do back counting, 6, 5. So what will come? 2. Okay. Then again you can write 0 here, 9 in your mind and open your 6 fingers. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. What is the answer? The answer is 3. Clear? So in this way, by using back counting, you will do the subtraction, and this is your homework. Whosoever is not know how to do the back counting, they will learn back counting. ओके, सो वी विल डू आवर सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग बैक काउंटिंग. तो सबसे पहले आपका होमवर्क यही है, आप ये एक्सरसाइज बुक में करोगे और बैक काउंटिंग की प्रैक्टिस करोगे वेरी फास्ट. इज दैट क्लियर? और बाय यूजिंग बैक काउंटिंग यू विल डू योर क्वेश्चन नंबर 3. हियर इट इज 6 and here it is 5. Open your 5 fingers, 6 in your mind, then start back counting. 5, 4, 3, 2, 1. So what is the answer? The answer is 1. Here it is nothing in below 2. So we will write 2 here. Okay? Now moving to our question number 2. Next question, 69 minus 7. Again 9 in your mind and then open your 7 fingers and start back counting. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So what is the answer? Answer is 2. So here you will write 2 and here as it is 6 because here is nothing below 6, so we will write 6 here. So rest of the questions you will do yourself. This is your work. ठीक है, अभी आप बुक में इतना वर्क करोगे और जो क्वेश्चंस मैम ने नहीं करवाए हैं बेटा वो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे. क्लियर? सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 3A. इस वीक में अभी आप इतना ही करोगे और सबसे ज़्यादा अपनी बैक काउंटिंग की प्रैक्टिस करोगे. ठीक है? ओके चिल्ड्रन, अभी आप ये वर्क बुक में ही करोगे. जब आपको कॉपीज मिल जाएगी देन वी विल स्टार्ट अवर वर्क इन अवर नोटबुक्स. टिल देन रिवाइज योर बैक काउंटिंग. ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर.